method in JSON. What is method? Method is a set of statement which performs an action. Types of method: user defined or created. User defined, it is created by user, and predefined, it is already created. Correct? List of common user defined method are no return with no argument, no return with argument, and a return with no argument, and a return with argument. Okay, that's example of no return with no argument. I'm creating here a method. That method is show method, right? What type does not return any value? किसी मेथड से पहले अगर void लगाते हो, it means this type method will not return any value. इस टाइप के मेथड से सिर्फ वैल्यू प्रिंट करवा सकते हैं, इंफॉर्मेशन प्रिंट करवा सकते हैं, लाइक you need to just print hello world. This method will print the hello world. If you need to print the current date, this can also print current date. And I'm calling this show method inside main function. So to call the method stop class, we just need to create an object. Let's create an object and call this method, and again put the console read line. Okay. So this will print hello world as well as current date, right? Okay. So this type methods basically used to print just information or value. So having void type as a return type means this method cannot return any value or any message. Now, example of no return with argument. Again, I'm taking a function this, and inside that I am defining an argument id and a string name. So what is an argument? Declaring variable inside method bracket it's called an argument, right? We can declare number of arguments, we can declare any type of argument. So I'm declaring here id and name. So id as an integer type and name as a string type. Let's print the value of id and name. So your id is id and your name is name, right? Again, we need to execute this method in main method. So to execute these methods, we just need to call this method. This method will ask you parameter of id and name. So let's pass the parameter here. So passing parameter here. So the basic difference between argument and parameters is argument declaring variable inside function bracket that is called an argument, and passing value to that required variable, required argument is called parameter. So we can also pass the user defined parameter here. But how we define the user defined? So to pass the user defined parameter, we just need to declare the id and name. Let's take the information from users. To get the user input, enter your id
enter your name, store name into name variable, and enter your subject. Sorry, color is not required. Colors only pass ID and name here. So you can pass ID or name as well. And you run this application, entering 1001 and name. This will be printing your ID is this and name is this. So this is basically no return with argument. Again, we are defining void as a return type. If method have void as a return type, this does not return any value. An argument I am declaring here integer and string. So similarly, we need to pass ID as an integer and name as a string. And the value of ID and name you are taking from user, right? So I have declared two type of method. This is the no return no argument, and this method is called no return with argument. Again, the third method is example of I call the ob0 test and then अच्छा जो हमने given value में पास की थी list method, right? Example of return with no argument. We can return any of the type. So first of all, I am returning integer value. So to return integer value, I am declaring a variable x of integer type and signing of that x is the 10 and return x here. Any method can return at the same time only the single value. Either we can return integer, string, double, character, float. So I'm returning only integer here. So if you are returning integer value, then to print this value by the main method, you just need to तब तक डिस्कस कर थोड़ा आप लोग ठीक है आप कहाँ से मैं दिल्ली तो पंजाब में रहने वाला हूँ यहाँ पे इधर जॉब कर रहा हूँ कहाँ पे कंपनी है लाइब्रेरी कंपनी है उसमें मतलब मेरी लाइन मैनेजमेंट लाइन है जो अभी थोड़ा चेंज करने की सोच रहा हूँ इसलिए बीटेक बीटेक है कौन से बीटेक मैंने 2013 में कर ली उसके बाद मेरा मैनेजमेंट लाइन में है जो ये कंपनी का मतलब ये सराय फैक्ट्री जस्ट सामने वाली की बिल्डिंग है उसमें ऑफिस है छुट्टी हो जाती है इस टाइम पे हाँ मतलब पुणे पुणे जाता हूँ फ्लेक्सिबिलिटी है थोड़ा पुणे से पुणे वहाँ जाता हूँ 15 मिनट देते हैं उसमें अच्छा स्कूटी से आ जाते हैं स्कूटी में बाइक से हाँ सर ने क्या आर्गुमेंट तो जो पैरा उसके अंदर पास होगा मेथड क्या है क्या बताया हमें मेथड व्हाट इज मेथड मेथड स्टेटमेंट सेट ऑफ स्टेटमेंट होती है मतलब जो एक्शन परफॉर्म होती है सेट ऑफ स्टेटमेंट क्या हुई इसमें हमारी एक मुझे बार बताओगे सर नहीं वैसे पूछ रहा हूं हमने मैं 2024 का पास आउट था इस बार हम क्लास दोबारा ले रहे हैं वो कल मतलब टच में नहीं है मैं कल से दोबारा आगे से इसमें ये वाली बोल रहा था कि अच्छी है नहीं आज कल तो मैं दोबारा स्टार्ट कर रहा हूं पहले जावा करिए इसमें क्लास में टेस्ट मेथड शो नाम एक फंक्शन बना दिया ठीक है उसको मेन फंक्शन में कॉल करें void के साथ void अगर जिस भी उसमें लग गया तो हमारे उसमें नो रिटर्न नो आर्गुमेंट का वो फंक्शन हो जाएगा ये पता चल गया
बट मुझे मेथड पता नहीं चला। मेथड व्हाट इज मेथड? जैसे ये जो हेलो वर्ल्ड है, बेसिकली हमने क्या किया, ये तो आपको नॉर्मल मेथड है, ये आपका नो रिटर्न विद आर्गुमेंट है, और अगेन जो मैं मेथड बनाया हूँ ये रिटर्न विद नो आर्गुमेंट है। यानी void के जगह पे आप int, कैप, फ्लोट, बाइट, बुलियन कोई भी टाइप यूज कर सकते हो, विद वैल्यू टाइप, रेफरेंस टाइप भी यूज कर सकते हो। कल मैंने डिस्कस किया था दो डिफरेंट टाइप इन डॉट में, एक वैल्यू टाइप, दूसरा रेफरेंस टाइप। तो अभी जो मैं रिटर्न करवा रहा हूँ फंक्शन का मेथड का जो रिटर्न है वो वैल्यू टाइप रिटर्न करवा रहा हूँ, लेकिन लेटर चैप्टर में या जब एमवीसी वगैरह आप पढ़ेंगे तो हम वैल्यू टाइप से ज्यादातर रेफरेंस टाइप को रिटर्न करवाएंगे, यानी या तो क्लास टाइप रिटर्न होगा या तो एरे टाइप रिटर्न होगा। सर इस केस में मतलब जो हमने ये डिफाइन करा है तो ये तो स्टैटिक ही होगा। बिल्कुल, अब ये फिक्स है, अब ये फिक्स है, वो जस्ट हम ये जान रहे हैं स्ट्रक्चर कि किस तरीके से नो रिटर्न विद नो आर्गुमेंट को इम्प्लीमेंट करते हैं, यानी स्ट्रक्चर यही रहेगा, स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा, बस इसके जगह पर डेटा टाइप चेंज हो जाएगा। यानी इंट की जगह क्लास टाइप आ सकता है, स्टूडेंट टाइप आ सकता है, लिस्ट टाइप आ सकता है, एरे टाइप आ सकता है, स्ट्रिंग टाइप आ सकता है, पर स्ट्रक्चर यही रहेगा। मेरे में ध्यान ये देना है कि जब कोई भी मेथड किसी भी टाइप का वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो मैं उसी टाइप का रिटर्न में उसे स्टोर करना होगा। तो मैं इस मेथड को एग्जीक्यूट करता हूँ और ये मेथड जो है क्या रिटर्न कर रहा है, एक्स, यानी वैल्यू ऑफ एक्स जो भी होगा जब ये मेथड एग्जीक्यूट होगा तो उसे प्रिंट कर सकते हैं। लेट्स सी, तो जो रिटर्न वैल्यू है आपका उसे आप डायरेक्ट प्रिंट नहीं करवा सकते हो। रिटर्न वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए अगर आपने इसे डायरेक्ट कॉल किया तो ये कोई भी वैल्यू आपको प्रिंट नहीं करेगा। रिटर्न मींस नॉट प्रिंट, रिटर्न मींस जस्ट लाइक थ्रो। ठीक है, आपको मेथड में कोई वैल्यू थ्रो किया है, कोई वैल्यू रिटर्न किया है, उसे आपको कैच करना होगा इफ यू वांट टू सी। तो कैच करने का दो तरीका है, आइदर तो आप उसे किसी वेरिएबल में स्टोर कर लो, तो फर्स्ट वे to print return value, इसे उसी टाइप के वेरिएबल में उसे स्टोर कर लो और इसे प्रिंट करवा दो। और सेकंड जो वे है, सेकंड वे टू प्रिंट रिटर्न वैल्यू just need to print the console line। डायरेक्टली आप मेथड को यहीं पे कॉल करो, ठीक है। तो दोनों से आपको एक ही रिजल्ट दिखेगा, वैल्यू ऑफ a1 is 10 and वैल्यू ऑफ a2 वैल्यू is 10। करने का मतलब दो डिफरेंट तरीका है, लेकिन जो आपका टॉप जो वे बताया हूँ ये ज़्यादा यूज होता है प्रोजेक्ट में। इसके बाद लास्ट आपका एक और मेथड रह गया, एग्जांपल ऑफ रिटर्न विद आर्गुमेंट, जिसमें हम सीखेंगे कि वैल्यू फंक्शन कैसे रिटर्न करता है और कैसे हम पैरामीटर पास करते हैं। एग्जांपल ऑफ रिटर्न विद आर्गुमेंट, रिटर्न विद आर्गुमेंट में मेथड बना रहा हूँ जिसका नाम स्फीयर है, यहाँ पर हमने a पास करा दिया है, दिस मेथड रिटर्न a into d। ठीक है, तो इस मेथड को जब आप कॉल करोगे तो आपसे पैरामीटर भी मांगेगा, और जो भी पैरामीटर आप पास करोगे वो पैरामीटर a into a एज ए रिटर्न कर देगा। यानी इस मेथड का रिटर्न क्या है, तो इंटीजर एज ए टाइप है, और मेथड ले क्या रहा है किस टाइप का पैरामीटर, तो इंटीजर टाइप का ले रहा है। यानी इस मेथड को क्या बोल सकते हो आप, दिस मेथड इज कॉल्ड रिटर्न विद आर्गुमेंट। यानी यहाँ पे आर्गुमेंट भी है और ये मेथड आपको वैल्यू भी रिटर्न कर रहा है। तो आर्गुमेंट किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का, और वैल्यू किस टाइप का रिटर्न हो रहा है, इंटीजर टाइप का। तो जब इस मेथड को एग्जीक्यूट कराओगे तो जो भी वैल्यू पास करोगे उसका एज अ रिटर्न रिटर्न हो जाएगा। सो लेट्स कॉल दैट फंक्शन।
स्क्वायर ऑफ 0 इस 1। ये प्लेस होल्डर है। मैं दो वैल्यू एक साथ दिखाना चाहता हूँ कि आपका जो a का स्क्वायर है वो ऑब्जेक्ट डॉट स्क्वायर से आ रहा है। इससे मेरा इस तरह से हाँ, if I want to print two values simultaneously, then we can use placeholder. 0 indicate first value and first indicate second value. If you want to print three values, then in that case we need to put 0, 1 or 2. If you want to print on a single value, then only need 0. It just the format of array, because array values always start from the 0 index. So when you print the list of value, we just need to start from 0 index. So this indicate placeholder. If you are using placeholder here before each and you are using placeholder here after each, it means the value of a will printed before each and value of a square will get printed after each. And जहाँ पे placeholder को रखेंगे value वहीं पे print होगा. So value of age 2 and a square of age 4. So let me square of 2 is 4. Why? Because 0 indicate value of a, 1 indicate value of a square. यानी a की वैल्यू हमने क्या दी है 2 and we are passing here 2 to the method and the same method is returning a into a and 2 into 2 4 यानी उसका जो रिटर्न होगा यहाँ पे आ जाएगा. So when we execute this it will return square of 2 is 4. ठीक है. तो इस तरीके से चार टाइप का मेथड है जिसे आपको दिमाग में रखना है. ये फर्स्ट है आपका नो रिटर्न नो आर्गुमेंट, यानी किसी मेथड का रिटर्न टाइप जब वाइड होगा इट मींस ये मेथड को वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा. और ये जो नेक्स्ट मेथड है आपका नो रिटर्न विद आर्गुमेंट है. इस केस में आप वैल्यू तो रिटर्न नहीं कर रहे हो लेकिन आर्गुमेंट है तो आपको यूजर से एज अ पैरामीटर लेना होगा. थर्ड जो मेथड है वो रिटर्न विद नो आर्गुमेंट है. रिटर्न किसी भी टाइप का हो सकता है. अगर ये इंटीजर रिटर्न है तो हमने x को रिटर्न किया है क्योंकि x एक इंटीजर वेरिएबल है. अगर ये स्ट्रिंग रिटर्न होता तो हमको स्ट्रिंग मैसेज रिटर्न करवाते हैं. और लास्ट जो मेथड बताया मैं आपको रिटर्न विद आर्गुमेंट का बताया जिसमें हम क्या कर रहे हैं वैल्यू को रिटर्न करवा रहे हैं और यूजर से इनपुट ले रहे हैं. यहाँ पे फंक्शन को कॉल किया फर्स्ट फंक्शन को, ये आपका सेकंड फंक्शन कॉल हुआ है, यहाँ आपका थर्ड फंक्शन कॉल हुआ दो तरीके से और ये आपका फोर्थ फंक्शन कॉल हुआ है. ठीक है. तो इस तरीके से यही चार मेथड है जिसके स्ट्रक्चर को ध्यान में रखना है. इसी स्ट्रक्चर्स को आपको पूरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंप्लीमेंट करना होगा. प्रोजेक्ट में मतलब हाँ इस पेज पे मतलब बिल्कुल. अब डेटा टाइप चेंज होता रहेगा. मान के चलो आपको स्टूडेंट की लिस्ट को डिस्प्ले करानी है, स्टूडेंट को लिस्ट को लेकर के ग्रेड में लेकर के आनी है, डिस्प्ले करानी है टैबुलर फॉर्मेट में. तो आपने पूरी टेबल के अंदर जो भी कॉलम्स है उसकी मॉडल डिफाइन कर लिया, आईडी नेम सिटी सैलरी व्हाटएवर, और स्टूडेंट नाम का क्लास बनाया, क्लास के अंदर सारी प्रॉपर्टीज है. अब वो प्रॉपर्टीज ना यूज करके बारी-बारी से स्टूडेंट टाइप यूज करेंगे. स्टूडेंट टाइप जो एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है which giving you multiple types. तो यहाँ पे जैसे इंट लिखा है इंट की जगह स्टूडेंट आता है. वो प्री डिफाइंड होगी यूजर डिफाइंड क्लास का जो नेम होता है हमेशा यूजर डिफाइंड होता है. तो डेटा टाइप यूजर डिफाइंड होगा और उस यूजर डिफाइंड टाइप के अंदर काफी सारे जो टाइप होंगे वो प्री डिफाइंड होंगे. ठीक है. तो आगे चल करके जब कलेक्शन ऑफ जेनरिक पढ़ोगे आप तो आप यही सीखोगे कि रेफरेंस टाइप को रिटर्न कब बनाते हैं. और रेफरेंस टाइप को रिटर्न तब बनाते हैं जब ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को लेकर के आना होता है या फिर डेटा को यूजर से दूसरे जगह ट्रांसफर करना होता है, तब हम रेफरेंस टाइप का रिटर्न बनाते हैं. इस केस में ये प्री डिफाइंड फंक्शन है. बेसिकली ये जो मेथड अभी बताया है दिस ऑल आर यूजर डिफाइंड. इसको सिर्फ चार तरीके से बना सकते हैं. प्री डिफाइंड जो मेथड है आपका राइट लाइन है, राइट है, रीड लाइन है, ये सब सारे प्री डिफाइंड है जो लाइब्रेरी के अंदर है. उसमें आप कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हो. जो भी एक्सपेरिमेंट करोगे आप अपनी यूजर डिफाइंड मेथड के साथ करोगे. राइट. नेक्स्ट चलें. सो जैसे वो